temperature measurement based on three principles. Okay, so the first one is thermometry based on thermal expansion. The second one is electrical resistance thermometry, and the third one is based on the thermoelectric phenomena. Okay, so on the thermometry based on thermal expansion, we will study two types of thermometers. One is liquid in a glass thermometer. All of you should be familiar with this type of thermometer. Is your standard thermometer जो आप लोग घरों में use करते हैं, ठीक है? So that is liquid in a glass bulb thermometer, ठीक है? The second one is thermometer or biometallic thermometers. We will discuss them in details in a while. Then on the principle of resistance thermometry, electric resistance thermometry, there are two types of thermometers that we will study in this chapter. Number one is RTD, or resistance temperature detectors. Okay? So this is a very simple, very basic principle. How it works, we know that electric resistance of a conductor depends on the temperature of a conductor. Okay? As the temperature experienced by any conductor increases, so does its resistance to electrical current also increases, and we can correlate or calibrate this behavior of a conductor to use the conductor as a thermometer. ठीक है, students, बात की समझ आ रही है? Any questions so far? Students? No, sir. ठीक है. Clear. The second one is a thermistor. Thermistor का भी principle same है. The principle for thermistor is that it's a device whose resistance either increases or decreases as it experiences change in temperature. ठीक है? What's the difference between two? We'll see that in either in this lecture or the next lecture, but probably in this lecture. And the third one is thermoelectric sensors, or commonly known as thermocouples. Okay? So we will go into those details in a while. Let's move to the next slide. So thermometry based on thermal expansion. A thermal expansion for most material, a change in size with change in temperature, a well-defined and repeatable phenomena which is useful for temperature measurement. Okay? Liquid in a glass thermometer, typically there is a difference between thermal expansion between the liquid and the glass. इसका क्या मतलब है? I'll ask you and then I'll explain what does that means. Calibration is needed, of course, calibration is needed, and it can achieve an accuracy up to plus minus 0.01 degrees C under carefully controlled conditions, typically plus minus 0.2 to 2 degrees C. Now, this is one of the most important things that you need to remember on this slide, because more often, when you need to measure temperature, you have to see what is the best or possible solution or best possible device for measurement of temperature. As an engineer, let's say there is a process in an industry, and you need to know the temperature of some fluid or some surface in that process industry. Now, next step is, how do you measure it? So after finishing this chapter, you would know at least three different, based on the principle of measurement, three different types of categories of measurement, and you will know around 4 to 5 different temperature measurement instruments that you can use. Now, which one of those will be suitable for your measurement? Apart from other factors, one of the factors would be
the accuracy of the instrument. For example, if your process doesn't require very accurate, highly accurate instrument, and it's fine if your measurement has an error of a plus or minus couple of degrees, then this liquid in a glass thermometer is a potential candidate for using for your measurement. This instrument is a potential candidate for using with your measurement. If, for example, you need to have an accuracy of plus minus 0.01 degrees C, of course you can achieve it with liquid in a glass thermometer, but it's difficult to achieve this accuracy, and you will need to do the process of measurement under carefully controlled conditions. Okay, what that means? That means that you will have to be very careful. You will have to fulfill certain requirements when doing those measurements. I'm not going to go into those details at the moment. I just want to say that if you want to casually use this type of thermometer, you can typically have an accuracy of plus minus 2 degrees C to plus minus 0.2 degrees C to plus minus 2 degrees C. But under special conditions of measurement, it is possible to achieve accuracy of plus minus 0.01 degrees C. Okay. The second type of temperature measurement instrument that use thermal expansion phenomena. So thermal expansion phenomena, the second type is called bimetallic thermometer, and it is used either in dial types of thermometers or in temperature control systems. Okay. So so what happens if you have any material and you provide it some heat? What happens to this material? It expands. Okay? It expands. This will be the new length of the material. And you can use this expansion to find out the temperature that is experienced by this material. Okay? So we use this phenomena either in a liquid bulk thermometer. Remember, आपके घरों में, ठीक है, जिससे आप temperature measure करते हैं, ठीक है? So this is your liquid in a glass thermometer. Okay? And the second one is called bimetallic thermometer. Okay? Now, bimetallic thermometer accuracy typically, if you see, it's more or less in the same range, but a liquid in a glass thermometer can typically achieve much better accuracy compared to a bimetallic thermometer. Now, how does a bimetallic thermometer work? So let me show you. This is liquid in a glass thermometer, and then we have a bimetallic thermometer. Okay. So how does bimetallic thermometer works? For example, if we have two metals, okay, a metal strip, first metal strip, this is our first metal strip, and this one is the second metal strip. Now, these two metal strips, and both the metal strips are of different material or two different metals, and then we have fused them together, joined them together, okay, bonded them together. Now, the two metals are selected such that the thermal coefficient of expansion for metal A is significantly different than thermal coefficient of expansion for metal B. Now, let's say that the length of both the metal strips is same at 0 degrees C. Let's say it's same at 0 degrees C. Let's say it's 1 inch or 2 inch length for both the metals which are bonded together. Now, let's suppose I fix one end of the metal of this bimetallic strip and then provide it some heat. So what would happen? Assume that metal A has
higher coefficient of thermal expansion compared to a metal B. Now, if the two metals were not bonded together, what would happen? Metal A will expand more than metal B. Okay? But since the two materials are bonded, so the only way for the two metals to expand differently while they are still bonded together is that the only way for it is to curve. Okay? Because of the curvature, even though the two metals are bonded together, one of the metal strip length has increased significantly, and the other one is not so much. ठीक है, इस बात की समझ आ रही है students? ठीक है? अच्छा, now we can use this behavior. So we can use this behavior in a dial type of thermometer. Remember, dial type of thermometer कुछ इस तरह से होते हैं. ठीक है? एक नीडल होती है और उसके इर्द गिर्द इस तरह से हमारे पास एक स्केल होता है, 0 डिग्री C और 50 डिग्री C और 100 डिग्री C. So this is our dial type of thermometer. ठीक है? Or let's suppose it is connected here on something. Maybe it's a pipe, and some fluid is flowing through this pipe. Now, what happens if you have a helical spring made up of a bimetallic strip, okay, such that the one end of the helical spring of bimetallic circular spring, okay, not helical, is connected to a needle. Now, if this bimetallic spring experience heat, so it will expand in a circular direction. Okay? When the temperature is reduced, it will contract in the circular direction. Now, since the needle is attached to the end of the spring, as the spring moves, the needle will also move on the scale. And we can calibrate this device to mark the scale from 0 to, let's say, 100 or 50, whatever is the range of this device. यहाँ तक student clear है? Any question? No, sir, clear. Okay. Now we can use the same. Remember in the previous slide, they said that this bimetallic strip behavior can be used either for temperature measurement. That's what we have done right now in a circular or dial gauge thermometer, or it can be used for control of the system. Now, how do you control a system with a bimetallic strip? Let's see that. आप में से कितने लोग thermostat के साथ familiar? What is a thermostat? कोई बता सकते हैं मुझे what is a thermostat, students? Anyone? Anyone know what's a thermostat? किसी को नहीं पता? Student? सर इक्विपमेंट होता है सर, वो टेम्परेचर को कांस्टेंट रहने देते हैं सर. ठीक है, मतलब है कि उसको जज करता है, जब वो डिविएट करता है सर वैल्यू से, तो फिर उसको मतलब अपनी वैल्यू पे ले आता है सर. ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है आपने बताया. ठीक है, सो थर्मोस्टेट इज बेसिकली टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट. ठीक है, और अगर जो आजकल भी शायद फ्रिजेस में आता है, पहले एसीज में भी होता था, एक नॉब होती थी जिस पे टेम्परेचर के नंबर्स लिखे होते थे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 0 मीन्स probably either coldest or sometimes it's 0 meant hottest and so on. ठीक है, तो उस नॉब को अगर आप घुमाते थे तो फ्रिज जो है वो या तो ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर को मेंटेन रखता है या कम कोल्ड टेम्परेचर को मेंटेन रखता है. क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक?
Everyone knows what's a thermostat now? किसी को कोई Yes. confusion है? ठीक है? No, sir. ठीक है, so let's see how can we make a thermostat out of a bimetallic strip. ठीक है, so let's pivot this bimetallic strip here. ठीक है, और फ्रिज में कूलिंग क्या चीज क्रिएट करते हैं, मतलब व्हाट्स द डिवाइस कि जब वो स्टार्ट हो जाता है तो उससे फ्रिज के अंदर कूलिंग क्रिएट होती है. व्हाट डू यू कॉल दैट डिवाइस स्टूडेंट्स? Compressor, sir. कंप्रेसर. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, कंप्रेसर है. सो मैं ये मेरे पास बिजली है और बिजली जो है यहाँ पर कंप्रेसर के साथ. ठीक है, लेकिन कंप्रेसर के साथ ये अभी इसको बिजली सर्किट हमारी कंप्लीट नहीं है. सर्किट जो है ये है. अगर अभी आप देखें बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है वो तो अगर आप इस सर्किट को देखें, दिस इज इनकम्प्लीट सर्किट, ओपन सर्किट है ना. देखें यहाँ पर कोई कांटेक्ट नहीं है. ठीक है, सो देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट. कंप्रेसर में से कोई बिजली नहीं गुजर रही है, तो कंप्रेसर इस वक्त ऑफ है. इमेजिन करें कि इस वक्त फ्रिज ठंडा है. इमेजिन करें कि फ्रिज का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया. व्हेन द हीट स्टार्ट इंक्रीजिंग, व्हाट विल हैपन टू दिस बायोमेटालिक स्ट्रिप, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका वो बताया था कि हाउ विल इट Expand होगी, sir. The two strips will try to expand, but since the coefficient of expansion is different for the two strips, so it will curve, and it will, at certain temperature, it will touch this point. ठीक है, clear है यहाँ तक? Yes, sir. What will happen now? Circuit will come. सर्किट विल कंप्लीट. सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्रेसर में से बिजली शुरू हो जाएगी. ठीक है, जब कंप्रेसर में से बिजली पास हो रही है, when the current start flowing through the compressor will start running and it will start cooling the refrigerator. ठीक है, कुछ देर बाद जो होगा, when it keep on cooling the refrigerator, ये बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा. when its temperature reduces, तो ये दोबारा इस पॉइंट को आ जाएगी. फिर क्या होगा, कंप्रेसर जो है अब क्या हो जाएगा, Turn off हो जाएगा, sir. टर्न ऑफ हो जाएगा. इफ द कंप्रेसर टर्न्स ऑफ, व्हाट विल हैपन टू द कूलिंग? ठीक है, कूलिंग स्टॉप Sir, होगी. अब आहिस्ता आहिस्ता फ्रिज जो है टेम्परेचर गेन करना शुरू कर देगा. ठीक है, या तो किसी ने फ्रिज का दरवाजा खोल दिया, उसकी वजह से इट लॉस्ट सम कूलिंग, या जो है जो फ्रिज की बॉडी है उसके थ्रू ये आहिस्ता आहिस्ता कूलिंग लूज कर रहा है या हीट गेन कर रहा है. तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहा होगा और आपके फ्रिज का टेम्परेचर जो है वो एक खास पॉइंट पे मेंटेन रहेगा. ठीक है, क्लियर है यहां तक? yes, sir. एनी क्वेश्चन स्टूडेंट? ये हमारे पास एक बेसिक थर्मोस्टेट है. ठीक है, और हम टेम्परेचर किस पॉइंट पे मेंटेन करना चाहते हैं वो हम सेट कर सकते हैं बाय मूविंग दिस पॉइंट आइदर अप और डाउन. ठीक है, इसको ऊपर या नीचे ले जाने से मैं टेम्परेचर, फ्रिज का टेम्परेचर फिक्स कर सकता हूं कि या तो वो फ्रिज का टेम्परेचर मिसाल के तौर पे -5 पे रहे या -10 पे रहे या -2 पे रहे. ठीक है, मेंटेन रहे, उसको मैं मेंटेन रख सकता हूं बाय मूविंग दिस कांटेक्ट आइदर अप और डाउन. ठीक है, बाय कीपिंग this distance, by regulating this, or by changing this distance between the contact point and the bimetallic strip. ठीक है, should I move forward, students? जी सर. So bimetallic strips simply employ one metal having high coefficient of thermal expansion with another having a low coefficient, providing increased sensitivity. जितने इन दोनों के दरमियान जो बायोमेटालिक स्ट्रिप के जो दो मेटल्स हैं, जितने इन दो मेटल्स की थर्मल कोएफिशिएंट के दरमियान डिफरेंस ज्यादा होगा, उतना ही वो बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है ज्यादा सेंसिटिव होगा टू टेम्परेचर चेंज. मतलब है कि उतना उसके अंदर उसके कर्वेचर चेंज ज्यादा होगा. अगर एक बायोमेटालिक है जो कि ऐसे दो मेटल से बना हुआ है जिनकी थर्मल
कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बहुत ज्यादा डिफरेंट है कंपेयर टू अनदर बायोमेटालिक स्ट्रिप जो ऐसे दो मेटल से बना हुआ है जिसके थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन में इतना फर्क नहीं है। तो जिनमें ज्यादा फर्क है वो सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर के लिए उस बायोमेटालिक स्ट्रिप का कर्वेचर ज्यादा होगा, और जो बायोमेटालिक स्ट्रिप जिसके मेटल्स के दरमियान थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट के दरमियान डिफरेंस कम है, सो फॉर द सेम टेम्परेचर वो वाला बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है उसका कर्वेचर कम होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फॉर द सेम इनपुट अगर थर्मल कोएफिशिएंट एक्सपेंशन के दरमियान डिफरेंस ज्यादा है तो उस इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। फॉर द सेम इनपुट आपको ज्यादा आउटपुट यानी ज्यादा कर्वेचर मिल रहा है, और उस इंस्ट्रूमेंट जिसके बायोमेटालिक स्ट्रिप के जो इंडिविजुअल मेटल्स हैं उनकी थर्मल कोएफिशिएंट एक्सपेंशन के दरमियान डिफरेंस कम है, तो उस इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी कम है। उसका क्या मतलब है कि फॉर द सेम इनपुट टेम्परेचर, ठीक है, इट्स कर्वेचर is comparatively या relatively less than the bimetallic strip of higher sensitivity. यहां तक क्लियर स्टूडेंट? जी सर। ठीक है, in war, ठीक है, in alloy is often used as one of the metals, since for this material thermal coefficient of expansion is 1.7 into 10 raised to power minus 8. ये I think this is check this unit, ठीक है, ये आप चेक करें, I'm not sure कि ये ठीक है, I'll check it myself as well, but I think it is true. हाँ हाँ ठीक है, this is fine. So sorry, that's the problem. ठीक है, so thermal coefficient of expansion is 1.7 into 10 raised to power 8 minus 10 to 10 raised to power minus 8 meter per degree C, as compared to typical values for other metals such as steels, which range for approximately 2 into 10 raised to power minus 5 to 2 into 10 raised to power 20 to 10 raised to power minus 5, ठीक है, मीटर पर डिग्री सी। समझ आ रही है? ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि जो इनवार जो है is one of the material that is used in bimetallic strip construction because its coefficient of thermal expansion is very small compared to your typical coefficient of thermal expansions for other materials, such as for steel. Okay? So there is a almost 3 order of magnitude. There is 3 order of magnitude difference between INVAR and steel. The bimetallic sensor is primary element in most dial thermometers. अगर आप किसी फैक्ट्री में चले जाएं उसमें आपको dial thermometers नजर आएंगे. So you should remember that most of those dial thermometers utilize bimetallic spring. ठीक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने explain करके दिया. And many of the thermostat. आजकल digital thermostat हैं. Of course they don't use bimetallic strip, but your traditional mechanical thermostat, they use bimetallic strips. Okay. Dial thermometer using bimetallic strip as their sensing element typically provide temperature measurement with an uncertainty of plus minus 1 degree C, 1 to 2 degree C. Okay, yeah, 1 degree C जो है, this is typical uncertainty for a bimetallic thermometer. Any question? Thermometry based on thermal expansion. Student, पहला टॉपिक खत्म है. That's it. अब बाकी डिटेल्स आपने बुक के चैप्टर में रीड करने एंड उसको समझना है. एनी क्वेश्चन आप मुझसे अगली क्लास में पूछ लें, बट जो कुछ आपने पढ़ा है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो फार, आस्क मी नाउ. स्टूडेंट्स, सर क्लियर है सर. clear? So let's move towards thermometry based on electrical resistance. अभी जो हमने 2 type of thermometer पढ़े थे, they were based on the principle of thermal expansion. ठीक है, thermometry based on the principle of thermal expansion. Right now we are studying another types of
thermometers which are based on the principle of thermal resistance. और इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल बहुत सिंपल है. सिंपल कैसे कि भाई कोई एक मटेरियल आप ले लें और उसके दोनों एंड, फॉर एग्जांपल एक मेटल रॉड ले लें, ठीक है, जैसे आपका पेन है, इमेजिन कि आपका पेन जो है वो स्टील से बना हुआ है, ठीक है, उस स्टील के एक एंड और दूसरे एंड के जो एक खास है, मिसाल फॉर एग्जांपल इट्स अ 6 इंच स्टील बार विद अ डायमीटर ऑफ लेट्स से 0.5 इंच, ठीक है, एक रॉड है, स्टील रॉड है which has a diameter of 0.5 inch and a length of 6 inches. ठीक है. Now अगर आप इन दो एंड्स के दरमियान एक वो लगा लें ओहम मीटर, ठीक है, और इसके रेजिस्टेंस मेजर करें, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से इस वक्त रूम टेम्परेचर 0 डिग्री सी है और इसका रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल 1 ओहम आ जाता है, फॉर एग्जांपल, ठीक है. नाउ इफ आई टेक दिस solid bar of steel and put it in a furnace whose temperature is at 0 degrees C, it came out to be 1 ohm. Now I put this in a furnace still connected to the wires, or let's say I just give it a mild temperature of 150 degrees C. Okay? Now if you check your ohm meter, you'll see that now the resistance of this metal bar has also increased from 1 ohm to, let's suppose, 1.15 ohm. Okay? That means, what does that mean? It means that the electric resistance of material changes or is a function of temperature. ठीक है? Of the material. अगर temperature ज्यादा होगा तो resistance भी ज्यादा होगा, अगर temperature कम है तो resistance भी कम है. And once we calibrate this behavior, ठीक है, we can use this phenomena for temperature measurement. Student, any question? नहीं है? Okay. ठीक है, so let me read it. As a result of physical nature of the conduction of electricity, electric resistance of a conductor or a semiconductor varies with temperature. Using this behavior as the basis for temperature measurement is extremely simple in principle and leads to two basic classes of resistance thermometer. Number one is RTD, resistance temperature detectors. ठीक है? And these RTDs are made of conducting materials or are made of conductors. The second type of thermal resistance based thermometer are thermistors. Now thermistors use the same phenomena. The phenomena is that the material electric resistance changes as its temperature changes. But in semiconductors, this phenomenon is a little bit different. This behavior is different than conductors' behavior. We'll see that in a while. Okay? Now, resistance temperature detectors, RTD, may be formed from solid metals wires that exhibit a change in resistance with temperature, of course. Depending on material selected, the resistance may increase or decrease with temperature. Now, this is typically resistance increase for metal resistance, electrical resistance increases with increase in temperature of the metal. Okay? But for semiconductors, they can have two types of behavior. One, the electric resistance increases with increase of the semiconductor temperature. The second one, electrical resistance decreases as its temperature increases. So for semiconductors, there might be a proportional or inversely proportional relationship, directly proportional or inversely proportional relationship for semiconductors. Okay. So let's move forward. Now, positive PTC and NTC device. Now,
just like in the previous slide, when I mentioned that some material will exhibit positive temperature coefficient. What does that mean? That the electric resistance of the material increases with the increase in temperature. This type of material is called, this type of material is noted as having a positive temperature coefficient. A negative temperature coefficient material is a material whose electric resistance decreases with increase in temperature. So the relationship is inverse. As the temperature experienced by the material increases, its electrical resistance decreases. Okay? Right. Let's first talk about RTDs, then we will discuss. Okay. Okay, so we have RTDs. Now these are some of the calibration curves for the materials. Okay, on the right hand side here, we have the calibration curves of different types of materials. So the first one, if you look, as the temperature increases, this one, the hollow circles, okay, in the bottom of the figure, this is a platinum RTD. Platinum RTDs are very expensive but highly accurate devices. As you can see, the behavior of this instrument is non-linear. It's not a linear. It's not like this. It's not a straight line. So it is non-linear, but we can approximate this nonlinear behavior. If you see for certain range, this behavior is linear, then from here to here, this behavior is again linear. So one of the things to note here is that the behavior is nonlinear. The second one is that this material is a PTC material, positive temperature coefficient material. How can I tell? If you see that the temperature increases from left to right on okay, and the resistance increases from bottom to top. Now, as the temperature increases based on this graph, the resistance also increases, even though this change is nonlinear, but the behavior is a PTC, positive temperature coefficient behavior. Okay? Coefficient material behavior. On the other hand, if I look at the solid circle, which is carbon glass, now carbon glass is a negative temperature coefficient material. See, okay, so carbon glass is basically a NTC material, because as the temperature increases, its electrical resistance decreases. Again, it's a NTC material. Okay. Now to, even if I said for let's look at now let's look at this solid triangles. Now solid triangles are एक मिनट. Stop working. Just give me one moment. I don't know what happened just. Okay. So now the solid triangle is basically a rhodium iron alloy. Okay. And as you can see, at least this part, this range of the material seems like a linear material, take a linear behavior. Now we can
approximate this behavior with a first order approximation. Even for a nonlinear instrument, we can approximate the linear part of the instrument with a first order approximation. And in here, that is R minus R naught is equal to K into T minus T naught. So, okay, we'll discuss that later, not right now. A thermistor may have a positive temperature coefficient or a negative temperature coefficient, NTC. A PTC material are metals or alloys, and the NTC materials are typically semiconductors. A semiconductor may also be a PTC. Okay? Any questions so far, students? Students? G students. Can you hear me? Students? Yes, sir. आवाज आ रही है अच्छा, अभी आवाज आ रही है? So, let me go and show discard. Okay, let's move to the next slide. Chale, let's move to the next slide. Do you have any question? Anyone? Do you have any question? No, sir. सर जी जी ये पूछिए। जो एनटीसी है एनटीसी सर हाँ पीटीसी का तो समझ आ रहा है माइक्रो लेवल पे सर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो मॉलिक्यूलर जो मोशंस है वो इंक्रीज होता जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना सर। अगर हम एनटीसी का बात करें तो माइक्रो लेवल पर सर इसकी समझ नहीं आ रही कि मतलब इसका रेजिस्टेंस किस तरह मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो डिक्रीज होता है। हाँ, ये हम डेविएट हो जाएंगे। देखिए सेमीकंडक्टर्स जो हैं, सेमीकंडक्टर्स आर नॉट कंडक्टर्स, ठीक है। वो आपको पता है, आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, देयर बिहेवियर इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट देन कंडक्टर्स, ठीक है। अगर हम उस डिटेल में जाएंगे, दिस इज बियॉन्ड द स्कूप ऑफ दिस लेक्चर, और एट दिस पॉइंट वी डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल। हमारा सिर्फ जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि सेमीकंडक्टर में बी अ पीटीसी डिवाइस और एन एनटीसी डिवाइस, ठीक है। एंड यू नीड टू नो व्हाट डू वी मीन बाय एनटीसी डिवाइस, ठीक है। ऑफ कोर्स जो आपके क्वेश्चन बहुत वैलिड है, आई अप्रिशिएट कि आपने एक इंक्विजिटिव क्वेश्चन पूछा है, लेकिन उस डिटेल में जाने के लिए फिर हम सेमीकंडक्टर्स में चले जाएंगे और फिर आई थिंक कि वो हम टॉपिक से बहुत ज्यादा हट जाएंगे। आगे हम इतना, हाँ, आगे हम एनटीसी और पीटीसी को इतना इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। All we need to know that some devices resistance increases, other devices resistance decreases with increase in temperature, ठीक है। सर सही है, समझ आया सर। मैं तो मतलब है कि इसमें कंफ्यूज है कि एनटीसी जो है वो मेटल्स भी हो सकते हैं, तो वो मेटल्स तो नहीं हो नहीं सकते नहीं सर। नहीं, वो मेटल नहीं है, सर सेमीकंडक्टर। फिर सही है, वो सेमीकंडक्टर का तो मतलब है कि वो फिर सही है सर। ठीक है, ओके, हाँ, glad. थैंक यू सर। अच्छा, now RTDs जो है are conductors, they are metals. Now resistant temperature detector, either they are typically made of platinum, which are most expensive and highly accurate, or nickel or copper. These are the three most commonly used metals for RTDs. Now the change in resistance is nearly linear over a specific range, ठीक है। full range के लिए नहीं है। Eventually इनमें से आप कोई भी सेंसर आप आरटीडी के तौर पे कोई भी मेटल यूज करेंगे, सो फॉर सम स्मॉल range of temperature, the material will behave linearly. Beyond that range, ठीक है, it will start to behave non-linearly. So for all of those instruments, जब आपको ये RTD मिलेगा, फॉर एग्जांपल आप एक लेबोरेटरी ग्रेड या इवन एक इंडस्ट्रियल ग्रेड RTD उठाते हैं, उसकी आपको डेटा शीट देंगे। उस डेटा शीट में लिखा होता है कि दिस आरटीडी वर्किंग रेंज इज फ्रॉम दिस टेम्परेचर टू दिस टेम्परेचर, ठीक है। एक खास टेम्परेचर के लिए होगा।
ठीक है, उससे ज्यादा के लिए अगर आप यूज करेंगे so that instrument will not be able to give you accurate results. Usually have a small positive temperature coefficient, PTC. ठीक है, small positive temperature coefficient. And since we know that the resistance is equal to resistivity multiply length, L is the length, divided by AC, which is the cross-sectional area. Sensors are generally constructed by mounting metal wires on a insulating support structure to eliminate mechanical strain and by encasing the wire to prevent changes in resistance due to influence from the sensor environment, such as corrosion. Strain-free expansion of conductor as its temperature changes. Okay, what do I mean by all that? So typically, आपके पास अगर एक आरटीडी है, अगर आप इंडस्ट्रियल आरटीडीज देखें, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और उसके एंड पे एक वायर लगी होगी, सिंपल एक जस्ट लाइक अ पेन के साइज का हो सकता है, ठीक है. इट विल बी a rod and whose tip has this portion is the tip of that rod, and this is where the RTD is. Now this spring, ये जो spring wound हुआ है, this spring जो आपको नजर आ रहा है, this is basically, for example, if it's a platinum RTD, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा rod platinum से नहीं बना. It is the platinum is this thing, this spring, ठीक है. अब spring की फॉर्म में इसको क्यों बनाया गया? Can anyone tell me क्यों बनाया गया, students? कोई बता सकते हैं? स्टूडेंट्स, चलो मैं हिंट्स आपको देता हूं. चलो मैं और भी हिंट दे देता हूं. एनीवन? स्टूडेंट? वो मेरी आवाज आ रही है? कोई एक स्टूडेंट जवाब दिया करें, फिर मुझे शक हो जाता है कि आपको मेरी आवाज नहीं आ रही. स्टूडेंट्स? सर आ रही है सर. अच्छा, किसी को नहीं पता? हाँ, ठीक है. सो हियर्स द थिंग, दिस हैज टू डू विद दो बातें. एक तो अगर देखें, अगर आप सॉलिड प्लैटिनम रॉड लेंगे, आप सबको पता है कि प्लैटिनम इज मोर एक्सपेंसिव देन गोल्ड, ठीक है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. सेकंड, अगर मैं 6 इंच का रॉड ले लूं, ठीक है, या लेट्स से 1 इंच रॉड हो, 1 इंच, लेट्स सपोज 1 इंच रॉड, ठीक है. अब 1 इंच रॉड में बेस्ड ऑन दिस अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा लूं, तो 1 इंच में बेस्ड ऑन द थर्मल कोएफिशिएंट इसमें हो सकता है 0.0001 इंच डिफरेंस आ जाए फॉर लेट्स सपोज 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज, ठीक है. लेकिन अगर मेरे पास 1000 इंच लॉन्ग वायर हो प्लैटिनम की और उसको मैं 10 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस प्रोवाइड करूं, तो उसमें चेंज इन लेंथ कितना आएगा? ऑफ कोर्स इससे ज्यादा आएगा ना, मे बी जी सर 0.1 इंच आ जाएगा. अब फॉर द सेम टेम्परेचर डिफरेंस ये लेंथी वायर जो है वो आपको ज्यादा चेंज इन लेंथ प्रोवाइड कर रहा है. मतलब उस इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी बढ़ गई है ना, आपको ज्यादा, यू कैन इजीली डिटेक्ट द चेंज इन लेंथ कंपेयर टू द स्मॉल वैल्यू. इसको डिटेक्ट करना मुश्किल है. नाउ थिंक अबाउट रेजिस्टेंस. इफ वी हैव ए 1 इंच वायर, ठीक है, और उसको मैं 10 डिग्री सी टेम्परेचर डिफरेंस प्रोवाइड करूं, ठीक है. Now, what will happen that the change in resistance for 1 inch wire will be small, क्योंकि this change in resistance is proportional to the length. अब इसका मतलब क्या है कि I should have, or change in resistance is inversely proportional to the area. इसका मतलब है कि rather than using
a thick, short length wire, I should use a long, small cross section area wire. यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? जी सर। ठीक है, अब इससे मुझे मल्टीपल फायदे हो रहे हैं। ठीक है, एरिया कम करने से फॉर द सेम टेम्परेचर चेंज उसका रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज होगा, लेंथ बढ़ाने से फॉर द सेम चेंज इन टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट का चेंज इन रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर एरिया कम होगा, लेंथ ज्यादा होगा, तो उस इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। एक तो ये एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है? कंपेयर टू अ सॉलिड 6 इंच हाफ इंच डायमीटर रॉड, एक 3 मीटर लॉन्ग वायर with a diameter of 0.5 mm will be lot cheaper compared to a solid rod. ठीक है, सो दो एडवांटेज में यहां पे मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई वी यूज दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। इवन दो आप सॉलिड रॉड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड रॉड आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। दूसरा क्या होगा कि उसकी जो सेंसिटिविटी होगी उस इंस्ट्रूमेंट की, उस आरटीडी की, जो कि एक सॉलिड रॉड प्लैटिनम से बना हुआ है, उसकी सेंसिटिविटी बहुत कम होगी। ठीक है, नाउ यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है पिछले स्लाइड पे, दैट इज मैकेनिकल स्ट्रेन। जुमला आप बाद में पढ़ लीजिएगा। नाउ मैकेनिकल स्ट्रेन, अगर ये स्प्रिंग में हवा में रख लूं, इसको मैं प्रोटेक्शन ना दूं, इसको मैं प्रोटेक्शन ना दूं, ठीक है, टिपिकली ये स्प्रिंग जो है ये हो सकता है किसी एक ग्लास कंटेनर के अंदर या किसी एक और मेटल कंटेनर के अंदर प्रोटेक्टेड हो। क्यों प्रोटेक्टेड है? क्योंकि फिजिकली ये स्प्रिंग डैमेज ना हो, फिजिकली इसके ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेन ना पड़े। क्यों? अगर मैकेनिकल स्ट्रेन इसके ऊपर पड़ेगा तो क्या होगा? इसके चेंज इन लेंथ और चेंज इन डायमीटर में फर्क आ जाएगा, मतलब देयर विल बी अ चेंज इन लेंथ एंड चेंज इन डायमीटर, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। लेकिन दैट चेंज इन रेजिस्टेंस इज नॉट बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, इट्स बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल। समझ आ रही है? ठीक है, देखें, एक रॉड है, ठीक है, इसके टेम्परेचर में इंक्रीज कर लूं तो इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। चले, एक तो ये तरीका है इसका रेजिस्टेंस चेंज करने का। दूसरा क्या है कि मैं टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता, आई एम नॉट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। मैं क्या करता हूं कि इस रॉड के ऊपर फिजिकल स्ट्रेन अप्लाई करता हूं सच दैट कि ये रॉड एलोंगेटेड हो जाए और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा हो जाए। तो उससे क्या होगा? बेस्ड ऑन द रेजिस्टिविटी फार्मूला इसका रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, even though it didn't experience any change in resistance, but its resistance changed nonetheless because of external physical strain. ठीक है, that's why अब देखें, एक मेटल का change in resistance can occur because of change of temperature, and either because of change of temperature or because of change of strain. ठीक है, अगर मैंने इस मेटल पीस को स्ट्रेन गेज के तौर पे यूज करना है, मींस आई वांट टू मेजर strain with the help of this metal piece, then I need to make sure that there is no temperature variation during my experiment. ठीक है, or if I want to use this metal piece as a temperature measurement device, then I need to make sure that there is no mechanical strain experienced by this metal piece while I'm using this metal piece as a temperature sensor. Clear है यहां तक students? जी सर, क्लियर है। अच्छा, so that's how we do it. We have a spring of the metal, ठीक है, और हेलिकल स्प्रिंग की फॉर्म में होगा, फिर उसको हम वाउंड कर देते हैं एक मैंड्रल पे, मैंड्रल, और उसके ऊपर एक अब इस स्प्रिंग के ऊपर, स्प्रिंग जो कि मैंड्रल पे वाउंड है, उसके ऊपर हम एक प्रोटेक्टिंग कवर लगा देते हैं, और देन वी यूज दिस इंस्ट्रूमेंट एज एन आरटीडी। पिछले जुमले में, पिछले स्लाइड में जो एक लेंथी छोटा सा
पैराग्राफ था उसका मतलब ये था, ठीक है। Insulating support structure to eliminate mechanical strain and by encasing the wire to prevent changes in resistance due to influence from the sensor environment such as corrosion, ठीक है। Encapsulation का ये भी फायदा है। Mechanical stresses resulting strains can be created by thermal expansion, thus provision for strain-free expansion of the conductor as its temperature changes is essential in construction of RTD, ठीक है। Okay, now जो हमारे पास the relationship between resistance of the metal conductor and its temperature, ये हमारे पास full relationship है। और अगर आप देखें इसके अंदर square की term मौजूद है, and then there is a cube term, यहाँ पे cube की term है, और फिर यहाँ पे fourth power की term है, and so on। अगर आपके पास एक भी square की term आ गई या cube की या four, any power more than one means that this is a non-linear equation, ठीक है। But जैसे आप Taylor expansion में करते हैं, you can take the first order approximation, ठीक है, and assuming that you use it in a, for example, अगर आपके पास ये कर्व है, ठीक है, अगर आप देखें इस कर्व का ये वाला पोर्शन जो है ये ऑलमोस्ट लीनियर है, और ये वाला पोर्शन जो है ये तो ऑफ कोर्स ऑब्वियसली नॉन लीनियर है। So if you use this first order approximation for this region of the calibration curve, तो आपकी फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन में और एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस नेग्लिजिबल होगा। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हमारे पास आरटीडी का फार्मूला ये है स्टूडेंट्स। जी सर, क्लियर है। ठीक है, और सिंपल है, ठीक है। हमारे पास रेफरेंस रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर, ठीक है। फॉर एग्जांपल टिपिकली रेफरेंस टेम्परेचर हो सकता है 25 डिग्री सी हो। इंस्ट्रूमेंट की आरटीडी जो आपको इंस्ट्रूमेंट मिलेगा उसकी डेटा शीट पे लिखे होगा कि इसका टी नॉट जो है या रेफरेंस टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सी है या 0 डिग्री सी है, व्हाटएवर। और एट दिस रेफरेंस टेम्परेचर इसका रेफरेंस रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। अगर और साथ में आपको कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी आपको डेटा शीट में गिवन हो गया, ये फार्मूला आपको गिवन है। अब अगर आप रेजिस्टेंस मेजर कर लें तो आप उससे टेम्परेचर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सो हाउ डू वी यूज एन आरटीडी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक फर्नेस है, फर्नेस के अंदर मैंने आरटीडी कनेक्ट कर दिया और यहां से मैं वायर ले आया। इन दो वायर्स को टिपिकली हम यूज करते हैं वी स्टोन ब्रिज, लेकिन इन दो वायर्स को फॉर एग्जांपल एक मैं ओम मीटर के थ्रू कनेक्ट करता हूं। ओम मीटर के थ्रू कनेक्ट करने से मेरे पास कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू ये होगी। डेटा शीट से मुझे आर नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, टी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। द ओनली अननोन इज टी which will be the temperature T. Clear, students? Questions? Yes, sir. Any question? I'm moving forward. ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, these are your typical coefficient of resistivities जो है एल्यूमिनियम, कॉपर, कार्बन, गोल्ड, आयरन, lead, nickel, nichrome, platinum, tungsten, thermistor, ठीक है। And most of the common types of RTDs are platinum, copper, and nickel, ठीक है। Platinum is widely used as an RTD sensor material used for wide temperature range from cryogenic to approximately 650 degrees C, accuracy as low as 0.005 degrees C, which is a very high accuracy, but typically its accuracy is plus minus 0.1 to 2 degrees C. Not generally not generally chosen for
ट्रांजिएंट टेम्परेचर मेजरमेंट। ट्रांजिएंट टेम्परेचर मेजरमेंट्स किसी को पता है व्हाट इज ट्रांजिएंट टेम्परेचर मेजरमेंट्स, क्या चीज होते हैं? ठीक है, ट्रांजिएंट मेजरमेंट वो होते हैं जो कि कंटिन्यूसली चेंजिंग टेम्परेचर होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली चेंजिंग टेम्परेचर से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल एक पिस्टन सिलेंडर है, ठीक है, और इसके अंदर आपने आरटीडी लगा दिया है। ठीक है, अब जब ये पिस्टन, लेट्स से इट्स अ 4 स्ट्रोक इंजन, तो जिस स्ट्रोक में फायर होगा, ठीक है, द फायरिंग स्ट्रोक विल रिजल्ट इन हायर टेम्परेचर। ठीक है, एंड फॉर द अदर 3 स्ट्रोक्स जो है वो टेम्परेचर जो है रिलेटिवली स्मॉल, मतलब रिलेटिवली लेस टेम्परेचर होगा, एक्सपीरियंस करेगा आरटीडी। लेकिन आरटीडी में, इस आरटीडी में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये, क्योंकि दिस चेंज इन टेम्परेचर इज अकरिंग सो फास्ट, मिली सेकेंड्स में ये चेंज इन टेम्परेचर अकर हो रहा है। ठीक है, सिग्निफिकेंट चेंज इन टेम्परेचर। तो दिस, बिकॉज दिस चेंज temperature is happening very fast in time, so we call this type of behavior is a transient behavior, means it's not a steady state behavior. Steady state का मतलब क्या है? चलिए मैं आपको ये बता दूं। फॉर एग्जांपल ये एक टेम्परेचर है, ठीक है, अब नाउ दिस इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये टाइम है, टाइम, और ये टेम्परेचर है। So see, initially temperature is constant, steady state. Then temperature changes, and then it's again constant. ठीक है? Then it's again constant. Now this is a steady state. This is steady state, and this one is transient state. Now, so during transient state, the temperature, there is significant variation of a value with respect to time. ठीक है? So platinum RTDs are generally not used for transient temperature measurement because their response is so slow. They take significant amount of time before they can give you the reading. You have to wait for it. Or chunke, if it's a fast changing temperature with respect to time, so you do not have time to wait for it, and you have to use some other type of temperature measurement instrument. Clear, students? Transient behavior. ट्रांजिएंट का क्या मतलब हुआ सर? Transient means if any value that changes significantly with time, this is called transient. ठीक है? This is a concept related to control. ठीक है, एक हमारे पास स्टेडी स्टेट होता है। चलिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। क्वेश्चन किसने पूछा, क्या नाम है आपका? रिजवान सर। रिजवान, बिल्कुल सही। रिजवान, आप लोगों ने कभी सदर में गए हैं? आप सदर में जी जी। फुटपाथ पे वो वेट बैलेंस वाले बच्चे बैठे होते हैं, देखें, जो आपको कहते हैं कि अपना वेट चेक जी करें। सर। ठीक है, अब जी जी सर। पहले वो यही बैठे हैं। मैकेनिकल टाइप वाले होते थे ना, आजकल तो डिजिटल भी आ गए, लेकिन पहले वो सुई होती थी वेट बैलेंस के ऊपर। ठीक है, तो जब आप उस वेट बैलेंस के ऊपर जी सर। खड़े होते थे तो आप एकदम रीडिंग नहीं लेते थे। क्यों? क्योंकि वो सुई एकदम फाइनल वैल्यू तक नहीं जाती, वो थोड़ी सी हिलती है। ठीक है, तो जो इसकी फाइनल वैल्यू है ना, दैट इज फ्लक्चुएशन हो स्टेडी। जाती है सर। हाँ, जो फाइनल वैल्यू होती है ना, दैट इज योर स्टेडी स्टेट वैल्यू, कि जब वो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, नाउ इट इज कांस्टेंट वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट्स नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन जब आपने उसके ऊपर खड़े हुए थे तो शुरू में वो नीडल कंटिन्यूसली चेंज हो रही थी, उसकी लोकेशन चेंज हो रही थी। नाउ दिस पोर्शन इज कॉल्ड ट्रांजिएंट behavior. ठीक है, it's a behavior before some value reaches its steady state value को पहुंचने से पहले जो intermediate value होती है, that is called transient behavior. Means it's something changing with respect to time. जब steady state का मतलब क्या है कि now the value is constant with respect to time, it's no longer changing with time. ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू।
Okay. So RTD resistance measurement, choice of appropriate resistance measuring device shall be made based on the required level of uncertainty in final temperature measurement. Conventional ohm meter, a small current flow through resistance measurement results in self-heating in RTD, which can result in appreciable delta T. ठीक है, हम ohm meter की मदद से RTD का resistance measure कर सकते हैं, but the problem with that is that ohm meter need to flow some resistance, some current through the RTD in order to measure its resistance. Now, when that current flows through a conductor, it will result in a heat energy release equal to I square R. Now, because of this heat energy release, what will happen that the temperature RTD will measure some value of temperature which will not be equal to the value of the temperature that you are trying to measure because of self-heating of the device. Okay? So if you are doing, now typically this may not be an issue if you do not desire a very high level of accuracy, but under circumstances where you need very, very high level of accuracy, you need to take into account self-heating of the device if you are using an ohm meter. Okay? You can use a bridge circuit, especially if you're using a bridge circuit in null method configuration. Then you can avoid self-heating of the RTD, because during null method, for the null method of measurement, no current will flow through the RTD and you will be able to measure its resistance as well. And since no current will be flowing through the RTD, there will be no self-heating of the RTD. And of course, this value of temperature measurement through null method will be more accurate than the deflection method using an ohm meter. Typically, for small change in temperature, the change of resistance of RTD will be very small. And because of that, you might be forced to use a bridge circuit, because compared to ohm meter, a bridge circuit is more sensitive. It can detect a smaller value or small change of resistance more easily compared to an ohm meter. Okay. Now, bridge circuits used to measure resistance RTD to minimize the above loading error and provide low uncertainty in measured resistance value using Wheatstone bridge circuit. To compensate for resistance of lead in RTD measurements, 3-wire RTD and 4-wire RTD bridge circuits are used. Let me show you if we have 3-wire and 4-wire RTDs. Okay, I think we will have that. Yeah, here. ठीक है, हमारे पास electrical. Let's go. We will discuss 3-wire and 4-wire, just small. Okay. Achha. Platinum is the most common material chosen for construction of RTDs. Platinum exhibits a predictable and reproducible change in electrical resistance with temperature, which can be calibrated and interpolated to a high degree of accuracy. The linear approximation for the relationship between temperature and resistance is valid over a wide temperature range. Platinum is highly stable. To be suitable for use as secondary temperature standard, a platinum resistance thermometer should have a value of no less than this is alpha value. Okay? This minimum value is indication of the purity of the platinum. In general, RTD may be used for the measurement of temperature ranging from cryogenic to approximately 600 degrees C. Any question in this slide? क्रायोजेनिक सर इसका क्या मतलब? Cryogenic. अच्छा, ठीक है सर, it's a very
it's a very low temperature, ठीक है? Let me see it. Ultra cold temperature. चलें. So this is below minus 50 degrees C, ठीक है? So cryogenics is cryogenic means ultra low temperature, ठीक है? Or typically that corresponds to 120 Kelvin or less, ठीक है? Okay, sir. अच्छा. Anything else? No? Let's move forward. अच्छा. Conventional ohm meter causes a small current to flow during resistance measurement, creating self-heating in the RTD, and appreciable temperature change of the sensor may be caused by this current, in effect causing a loading error. ये अभी हम थोड़ी देर पहले discuss कर चुके हैं. Bridge circuit as described in chapter 6 are used to measure the resistance of RTD to minimize loading errors and provide, ठीक है, and provide low uncertainties in measurement of resistance value, ठीक है? तो देखें ये हमारे पास डिफ्लेक्शन मोड है, ठीक है? और हम जो है सॉरी डिफ्लेक्शन मोड नहीं, हमारे पास ये जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस है, नल मोड है, ठीक है? 3 वायर एंड 4 वायर ब्रिज सर्किट आर यूज. इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि हम ब्रिज सर्किट की डिटेल में बहुत ज्यादा चले जाएंगे. When greater accuracy, सर बस आप इतना याद रखें, if you ever need even higher accuracy, you should try or you should consider using a 3 wire or a 4 wire bridge circuits, ठीक है? उसकी डिटेल्स जो है फिग्लियोला की बुक में मेरे ख्याल में मौजूद हैं, बट मैं इस टॉपिक में उसकी डिटेल में नहीं जाता. सिर्फ आपके लिए मैंने यहाँ पे मेंशन इसलिए किया है. Let's suppose you're doing some experimental work in your M.S.C. PhD or some research lab, and you need to measure very high resistance, very high accuracy resistance values. Then you should read about effect of lead wires on the accuracy of resistance measurement in Wheatstone bridge method of measurement, and how you can avoid or how you can minimize the uncertainty by using a 3 wires and 4 wire bridge circuits. ठीक है, बस इतना आप याद रखें. A simple example, an RTD from one arm. An RTD forms one arm of an equal arm Wheatstone bridge, as shown in figure. The fixed resistance R2, R3, ठीक है. This one is, okay, R2, R3 are equal to 25 ohm. The RTD has a resistance of 25 ohm at 0 degree C. So T naught is equal to 0 degree C and R naught is equal to 25 degree C. हमारे पास फार्मूला क्या है? R is equal to R naught into 1 plus alpha T minus T naught. So T naught की वैल्यू आ गई हमारे पास, R naught की वैल्यू आ गई, ठीक है? अल्फा की वैल्यू गिवन है. Suppose the coefficient of resistance for this RTD is ये वैल्यू अल्फा की वैल्यू है. So alpha की वैल्यू गिवन है. A temperature measurement is made by placing the RTD in the measuring environment and balancing the bridge by adjusting R1 value. The R1 value required to balance the bridge is 37.36. So R1 value of 37.36 ohm balances the RTD
balances the bridge, और balance bridge की हमारे पास फार्मूला क्या है इस केस में, R3 divided by R2 और R1 divided by R4, yeah sorry RRTD by R1। अब मुझे नजर नहीं आ रहा, आपको नजर आ रहा है ये R2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट, सर R2 है सर, ये R2 लिखा हुआ है। ये R2 लिखा हुआ है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट so this will be नहीं, ये क्या लिखा हुआ है? Is this R1? सर R1 है, ये R1 लिखा हुआ ठीक है। है, so फिर ये फार्मूला ठीक है। So we know that R3 is 25 ohm, R2 is 25 ohm, RTD, we need to measure our RTD, and R1 is 37.38 ohm. ठीक है, based on this, our RTD is equal to 37.38 ohm, and we can plug this value in here to find out the unknown temperature T. ठीक है, very simple one line problem. ठीक है. Now consider the bridge circuit of an RTD of example 8.1. To select or design a bridge circuit for measuring the resistance of RTD, in this example, the required uncertainty in temperature would be specified. If the requirement in uncertainty is in the measurement temperature is equal or less than 0.5 degrees C, would a 1% total uncertainty in each of the resistance that make up the bridge be acceptable? Neglect the effect of lead wire resistance for this example. I'll give you 1 minute. आप खुद पढ़ लें, फिर I'll explain. Read the statement of the problem. Just 1 minute. Take 1 minute. जी स्टूडेंट्स, किसी को समझ आ रही है स्टूडेंट्स? Students, anyone? Students, जी सर। इस क्वेश्चन में कोई इशू है? कंफ्यूजन है? अच्छा, मेरे साथ कौन ये मिलके सॉल्व करेगा? Who will solve this problem with me? ठीक है, anyone? Is there any candidate? कोई है? Any students? चलिए, let me ask महमूद खान. महमूद खान? Yes. जी महमूद, इस क्वेश्चन में चले मैं आपको पहले एक्सप्लेन करके दूं। ये पिछले क्वेश्चन की कंटिन्यूएशन है, पहली बात, ठीक है? दिस इज कंटिन्यूएशन, इट्स द सेम सर्किट, ठीक है? इट्स द सेम सर्किट, व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, सेम आरटीडी, सेम रेजिस्टेंसेस, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है? लेकिन इन्होंने क्वेश्चन हमसे एक पूछा है, और वो क्वेश्चन ये है कि ये हर एक जो रेजिस्टेंस है इसमें अनसर्टेनिटी है। अभी इन्होंने क्या कहा है कि R2 resistance at R2 and R3 are 25 ohm.
they are saying that R2 is equal to R3 is equal to 25 ohm. ठीक है, इस क्वेश्चन में ये कहा है, जबकि एग्जाम्पल 8.2 में वो कह रहे हैं कि R2 is equal to R3 is equal to 25 plus minus 1% of 25. So 1% of 25 जो है 0.25 ohm. Mahmoud? Yes, yes. ठीक है, ठीक है, that's what it's saying. देखिए वो क्या करें, if each of the resistance that make up the bridge would a 1% total uncertainty in each of the resistance that make the bridge be acceptable. लेकिन क्राइटेरिया हमने क्या है, क्राइटेरिया हमारा ये है that the uncertainty in the mere temperature should be equal or less than 0.5 degree C. ठीक है, that's what it's saying. वो कह रहा है कि आपने जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले टेम्परेचर की वैल्यू इस फार्मूले से फाइंड आउट की थी ना, अब टेम्परेचर अभी तो हमने एग्जांपल 8.1 में तो हमने कोई अनसर्टेनिटीज यूज नहीं की थी, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास इसकी आंसर जो है वो मेरे पास फॉर एग्जांपल आ जाता है 40 डिग्री से, ठीक है, लेकिन वो इस केस के लिए हमारे पास आ रहा है, जब हम अनसर्टेनिटी रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटीज होंगी तो टेम्परेचर में भी अनसर्टेनिटी होगी, सम अनसर्टेनिटी इन टेम्परेचर, तो वैल्यू ठीक है, चेंज रहेगी। वो कह रहे हैं कि दैट अनसर्टेनिटी इन, हाँ, तो वो कह रहे हैं कि दैट uncertainty in temperature should be no more than 0.5 degree C. मतलब है यहां पर जो वैल्यू आएगी it should be either 0.5 degree C or less, some less than 0.5 degrees. The requirement is that the uncertainty in temperature temperature value should be equal 5 degree C. दोबारा पढ़ लेते, ठीक है, consider the bridge circuit of सर आपकी आवाज नहीं आ 0.1, रही। ठीक है, इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट, टू सेलेक्ट, अच्छा अभी आवाज आ रही है? सही है सर। यस सर, हेलो हेलो यस हेलो, सर, सही हो गई। जी सर, अभी सही है सर। सेलेक्ट, ठीक है, मुझे बता गया, फिर कोई मसला. Select or design a bridge circuit सर अभी वॉइस नहीं आ रही सर। अच्छा, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही जी है। सर, अभी सही है सर। Can you hear me, यस सर। students? अच्छा, चल मैं थोड़ा इंतजार करता हूँ, मेरे ख्याल में देयर इज सम नेटवर्क प्रॉब्लम ऑन माय एंड, थोड़ा सा इंतजार करते हैं क्योंकि बार बार ड्रॉप. एक मिनट, अभी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है यस सर। स्टूडेंट्स? अच्छा चलिए, बस और स्क्रीन भी नजर आ रहा है यस सर। स्टूडेंट्स? चलिए, अच्छा, so to select or design to select or design the bridge circuit for measuring the resistance of the RTD in this example,
The required uncertain temperature we specified. और वो specified क्या specified की गई है? That the required uncertainty in the mere temperature should be equal or less than 0.5 degree C. ये हमारा target है. ठीक है? सारी स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक स्टूडेंट मेरे साथ कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करें ताकि मुझे अंदाजा हो, ऐसे ना हो कि सर अभी सही है आवाज। स्टूडेंट्स अच्छा, तो दरमियान में मुझे आपको एक स्टूडेंट जो है वो मेरे साथ कम्युनिकेट करे, यस सर, कुछ ऐसे, जस्ट गिव मी सम फीडबैक ताकि मुझे अंदाजा हो कि आई हैव नॉट लॉस्ट यू देयर। ठीक है, तो हमारे पास यूटी की स्पेसिफिकेशन मौजूद है कि अनसर्टेनिटी इन टेम्परेचर शुड बी इक्वल और लेस देन 0.5 डिग्री सी। और हमें ये कहा गया है कि अगर तो हर रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटी जो है वो 1% हो, तो क्या इससे हम टेम्परेचर की अनसर्टेनिटी का टारगेट अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ठीक है, so let's go to the next slide. How do we do it? ठीक है, how do we do it? We know that हमारे पास how do we measure resistance, sorry, temperature. हमारे पास temperature का फार्मूला हमारे पास है. Let me start from a clean slide. Discard, create a new slide here. New slide, have it blank completely. Layout. Okay. So if you remember, our RTT formula is R is equal to R naught into 1 plus alpha T minus T naught. Okay. So alpha T minus T naught, or R alpha T minus T naught is equal to R minus R naught. अगर मैं गलती कर रहा हूं तो फिर मुझे बता दें. So T is equal to ठीक है, so T is equal to R minus R naught divided by R alpha plus T naught. अच्छा स्टूडेंट मुझे बताएं कहीं पे मैंने गलती तो नहीं की? स्टूडेंट्स, एवरीथिंग फाइन? सर ये डिनोमिनेटर में और नॉट होनी चाहिए। आर नॉट होनी चाहिए सर, हाँ, आर मल्टीप्लाई चलो नॉट बहुत मल्टीप्लाई। थैंक यू, बिल्कुल सही, आपने सही कहा. अच्छा, अब हमारे पास अगर देखें, इसमें आर नॉट की वैल्यू तो गिवन है क्वेश्चन में. टी नॉट की हमें पता है कि आर नॉट इज इक्वल टू 25 ओहम एट टी नॉट ऑफ, टी नॉट की वैल्यू क्या थी हमारे पास? टी नॉट की वैल्यू एट 0 डिग्री सी, 0 डिग्री सी. ठीक है, so we need to know everything else is known, the only unknown is R. तो वो हमारे पास RTD का फार्मूला अगर आपको याद हो, so RTD came out to be R1 into R3 divided by R2, कुछ इस तरह से फार्मूला था. ठीक है, now in our case this will come out to be, R1 will come out to be 37 point, ठीक है, R1 will come out to be 37.36 ohm. ठीक है, और इसका प्लस माइनस, इसका 1% अनसर्टेनिटी, व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी ऑफ 1%? इसकी अनसर्टेनिटी जो है दैट इज 0.3736 ओम.
ठीक है, so this is your R1 multiply R3 is 25 plus minus 0.25 ohm. ठीक है, और divide by R2 which is again 25 plus minus 0.25 ohm. ठीक है, now this will result in RTD, or I can also actually write it as such. RTD is equal to R bar plus minus U uncertainty in RTD. ठीक है, now R bar is 37.36 multiply 25 divided by 25 is equal to 37.36 ohm. But uncertainty in RTD is equal to partial R over partial R. So we have ठीक है, partial R RTD over R1 into uncertainty in R1 square plus ये तमाम जो है उसके अंदर आ जाए. So rather than typing me here, ठीक है, so partial derivative of RTD with respect to R1 multiply uncertainty of R1 whole square plus partial derivative of RTD with respect to R2 multiply uncertainty of R2 whole square plus partial derivative of RTD with respect to R3 multiply uncertainty of R3 whole square and then under root. ये कौन सा, what do we call this formula? ये कौन सा formula है students? Sir, some root means square. कौन सा? RSS. Sir, RSS. ठीक है, so if you have to combine multiple uncertainties you use RSS formula. ठीक है, so इस case में when I put these values, when I differentiate RTD का formula हमारे पास क्या आ गया? This is the formula RTD का formula. हमारे पास क्या है? RTD is equal to R1 into R3 divided by R2. ठीक है, if you differentiate RTD with respect to R1, it comes out to be R3 divided by R2. When you differentiate it with respect to R2, तो आप quotient formula use करते हैं. When you differentiate it with respect to R3, anyway, so you do all the differentiation and then multiply it with uncertainty values. ठीक है, for R1 and R2, uncertainty is 0.25 ohm. For R3, it is, sorry, for R1, ये values मुझे नजर नहीं आ रही. अच्छा, इन सब में इन्होंने 0.25 ओम यूज किए. अच्छा, ये बैलेंस ब्रिज कंडीशन के लिए they are using balance bridge condition, but if we want to find the sorry, for the initial bridge condition के लिए, ठीक है, but if we want to find out uncertainty at the specified temperature, एक मिनट, sorry. ठीक है, ठीक है, देखें इन्होंने जो है
तमाम जो है उसके लिए यूज़ किए हैं, इनिशियल कंडीशन के लिए। और इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक मिनट, वो सारा मैंने इरेज कर दिया है, ठीक है। सो फॉर इनिशियल कंडीशंस, एक मिनट, अच्छा ये फर्दर फार्मूले में यूज किया, ठीक है। सो ओके, sorry for the confusion, ठीक है। So from here what we do, so we found out R value, we also find out U uncertainty of RTD, ठीक है। I used the final value of RTD measurement, which is 37 point something, 37.36 ओम, ठीक है। जो बुक में क्वेश्चन सॉल्व हुआ है वो इनिशियल वैल्यू ऑफ आरटीडी के लिए हुआ है, व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ आरटीडी वाज 25 ओम, ठीक है। इट इज फाइन आइदर वे। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहा गया है कि इनिशियल वैल्यू पे मालूम करें तो फिर आप इनिशियल के लिए करें, अगर फाइनल वैल्यू के लिए कहा गया तो फाइनल वैल्यू के लिए करें, अगर नहीं कहा गया तो आपकी मर्जी है कि आप किस वैल्यू पे मालूम कर लेते हैं, ठीक है। So once you have uncertainty of RTD, then let me erase something here. Once you have those uncertainties, okay, then now I have R, which is equal to R bar plus uncertainty, sorry, R RTD, which is equal to R bar RTD, which is equal plus uncertainty of R RTD, ठीक है, that is equal to 37.36 ohm plus minus अनसर्टेनिटी ऑफ आरटीडी। अच्छा ठीक है, चूंकि इन्होंने कैलकुलेशन जो है वो इन्होंने कैलकुलेशन इनिशियल वैल्यू पे की है। सो फॉर दैट इनिशियल वैल्यू इनके पास अनसर्टेनिटी जो आ रही है दैट इज 0.433, ठीक है। वट एवर, चले मैं यही वैल्यू यूज कर लेता हूँ, लेकिन जाहिर है हमारे और उनके जवाब में थोड़ा फर्क होगा, 433 ओम। एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर ये जो आपने R1 लिखा है 37.36, ये इसके साथ आगे प्लस 0.3736 कहाँ से लिखे हैं? बाकियों में 37 सर, बाकियों में तो हमें पता है कि 25%, मतलब 25 हो तो उसके साथ हमारे पास 0.25% अनसर्टेनिटी होगी और नीचे वाले के साथ भी, लेकिन ये 37.636 जो हमारे पास R1 के वन है, इसमें तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि इसमें कितनी अनसर्टेनिटी होगी। वी एज्यूम करें, वी एज्यूम, आपको अगर रेजिस्टेंस का पता हो ना तो रेजिस्टेंस की क्लासेस हैं। सो देयर इज ए 5% अनसर्टेनिटी रेजिस्टेंसेस होते हैं, 1% अनसर्टेनिटी रेजिस्टेंस होते हैं। आई एम एज्यूमिंग that the uncertainty in the variable resistance is also 1%, ठीक है। हमारे हमें हमें ये दोनों तो गिवन है ना कि these have a uncertainty of 1%. I'm also assuming that the uncertainty in R1 is also 1%, चूंकि R1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 37.36 ओम, तो इसका 1% अनसर्टेनिटी जो होगा दैट विल बी 0.3736 ओम होगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है। Now once I have this RTD की वैल्यू मुझे इस फॉर्म में आ जाए, then I have to put this here, ठीक है, where this R is your RTD, ठीक है, and if you put it here, so my T will be equal to T bar plus minus uncertainty of T bar, uncertainty of T will be equal to, यहाँ पे हमने कोई गलती तो नहीं की इस फार्मूले में स्टूडेंट्स? स्टूडेंट सर किस जगह पे?
यहाँ पे। नो सर ये सही है सर, मैंने भी किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही आ रहा है सर। अच्छा जी ठीक है, सर। थोड़ा चले वो चले, लेट्स प्रोसीड देन वी विल सी। सो वी विल गेट आर आर RTD minus plus uncertainty of RTD ठीक है, माइनस आर नॉट। ठीक है, आर नॉट की अनसर्टेनिटी गिवन नहीं है। ठीक है, वी एज्यूम कि इसमें कोई अनसर्टेनिटी है ही नहीं, इट हैज जीरो अनसर्टेनिटी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में जो आर नॉट की वैल्यू गिवन है, ठीक है, दैट इट्स वैल्यू इज 25 ओम एट 0 डिग्री सी। ठीक है, सो हम अपने लिए खुद कॉम्प्लिकेट नहीं करते, वी एज्यूम दैट देयर इज नो अनसर्टेनिटी इन आर नॉट। ठीक है, डिवाइड बाय R naught, no uncertainty in R naught, no uncertainty in alpha, and plus T naught, no uncertainty in T naught. ठीक है, now if you try to find out uncertainty in T, ठीक है, अब T bar की वैल्यू अगर यहाँ पे देखें हमारे पास दो वैल्यूज है। T bar की वैल्यू तो सिंपल है, T bar will be equal to R RTD bar minus R naught divided by R naught into alpha माइनस टी नॉट। ठीक है, इससे आपके पास टी बार की वैल्यू आ जाएगी, और अनसर्टेनिटी इन टी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, वही रूट सम स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन इस की चीज में अगर आप देखें हमारे पास इस फार्मूले के अंदर, टी के फार्मूले के अंदर, एक मिनट क्या हो गया, अच्छा टी के फार्मूले के अंदर अगर आप देखें, टी के फार्मूले के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू RTD, सिर्फ एक ही चीज है जिसके अंदर अनसर्टेनिटीज है ना, बाकी चीज के अंदर तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। सो वी विल ओनली डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू RTD R, और देन देयर इट विल बी अनसर्टेनिटी ऑफ RTD, एंड देन इट विल बी अ होल स्क्वायर, क्योंकि बाकी कोई टर्म्स है ही नहीं किसी और चीज में अनसर्टेनिटी। इस टी के फार्मूले में देखें, टी के फार्मूले में सिर्फ अनसर्टेनिटी RTD में, बाकी ना R नॉट में है, ना T नॉट में है, ना अल्फा में है, तो हमें बाकी चीजों के अगेंस्ट डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इफ वी डू दैट देन आवर फार्मूला बिकम्स वेरी सिंपल, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं, और हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है। ठीक है, नाउ इफ यू डिफरेंशिएट T with respect to R naught, ठीक है, तो वो आप कर लेंगे, डिफरेंशिएशन से जो वैल्यू आ जाएगी उसको आप यू आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अनसर्टेनिटी ऑफ RTD के साथ, तो आपके पास टेम्परेचर अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चंस? एक्सक्यूज मी सर। जी, सर ये जो बाकी तो क्लियर हो गए, जो मीन वैल्यू है ये तो क्लियर है, लेकिन ये अनसर्टेनिटी में सर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसकी समझ नहीं आ रही सर। वो कैसे पिछले बार समझ? सर मतलब पार्शियल टी बाय पार्शियल RTD ये कहाँ से आएगा सर? हम्म ठीक है, मैं समझाता हूँ। वो डेंसिटी का फार्मूला याद है आपको? जी सर। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास दो स्टेटिस्टिकल वैल्यूज हैं, एक मेरे पास मास की वैल्यू है, जो इसको हम मास बार प्लस माइनस अनसर्टेनिटी इन मास कह देते हैं। ठीक है, और लेट्स सपोज ये वैल्यू मेरे पास आती है 10 प्लस माइनस 1 kg। ठीक है, 10 कॉरस्पॉन्ड कर रहा है मीन वैल्यू को, और 1 कॉरस्पॉन्ड कर रहा है अनसर्टेनिटी इन मास को। ठीक है, ठीक है सर। फिर जो है मेरे पास वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम इज V बार, ठीक है, मीन वैल्यू ऑफ वॉल्यूम प्लस माइनस अनसर्टेनिटी ऑफ वॉल्यूम, दैट कम्स आउट टू बी लेट्स सपोज 5 प्लस माइनस 0.7।
मीटर क्यूब, चले मैं मीटर क्यूब कर लेता हूँ जी। लेक्चर तो ख़त्म है, आपने जुमात के पास जाना है कि सिर्फ नमाज पढ़नी है? जुमात के लिए चले आप नमाज पढ़ के आ जाएं, रिकॉर्डिंग है ना आपके पास? बस मेरा लेक्चर ख़त्म है, सिर्फ मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ अनसर्टेनिटी, उसके बाद मैं आपकी अटेंडेंस, खैर मैं अभी आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ, ठीक है? आप नमाज पढ़ लें, अगर और भी जाना चाहते हैं तो वो कर लें। मेरी तरफ से आप लोग फारिग है, मैं सिर्फ अनसर्टेनिटी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, बाकी स्टूडेंट ब्रेक लेना चाहते हैं या अभी मैं कैरी ऑन करूं? जल्दी से मुझे बता दें नमाज के लिए, अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं। कैरी ऑन कर। ठीक है, सर कैरी अगर ऑन। एक चलें जो स्टूडेंट जिनका, कंटिन्यू कर। ठीक है मैं जल्दी से कर लेता हूँ, ठीक है? सो अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम हो जाएगी, V इज 5 और अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज 0.7, ठीक है? अब अगर डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या है, डेंसिटी का अगर आप नॉन स्टेटिस्टिकल वैल्यू में फार्मूला देखें तो D इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना, लेकिन यही फार्मूला जब मैं अनसर्टेनिटी के साथ लिखूंगा देन इट बिकम्स D इज इक्वल टू D बार मीन वैल्यू ऑफ डेंसिटी प्लस माइनस uncertainty in density will be equal to mean value of mass plus minus uncertainty in mass divided by mean value of volume plus minus uncertainty in volume, ठीक है? यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर यहां तक क्लियर नहीं है तो मुझे बता दें। क्लियर है सर। ठीक है, क्वेश्चन किसने पूछा था? भाई ने, मुझे नाम बता दें। मैंने। मुश्तबा? यस सर। ठीक है मुश्तबा, बस आप मेरे साथ जो है जरा कम्युनिकेशन में रहें, ठीक है? गिव मी फीडबैक। सो जब व्हेन यू गेट दिस फार्मूला, आप इस फार्मूले से डायरेक्टली दोनों वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। दोनों से क्या मुराद है मेरी? डी की दो वैल्यूज है ना, एक डी की मीन वैल्यू है, द अदर वन इज अनसर्टेनिटी इन डी। यू कैन नॉट कैलकुलेट द टू वैल्यू डायरेक्टली फ्रॉम दिस फार्मूला, ठीक है? डी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। डी की वैल्यू हम तमाम मीन वैल्यूज ले लेंगे तो मेरे पास डी की मीन वैल्यू आ जाएगी। तो मीन वैल्यू क्या होगी? मास की मीन वैल्यू 10 है, वॉल्यूम की मीन वैल्यू 5 है, तो मेरे पास 2 kg पर मीन। मीटर क्यूब वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? ये तो हो गया। अब अनसर्टेनिटी आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि आप यूं निकले अनसर्टेनिटी इन मास डिवाइड बाय अनसर्टेनिटी इन डी और इससे आप वैल्यू निकल, नो दैट इज रॉन्ग, ठीक है? अनसर्टेनिटी इन डी डेंसिटी में अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए आप RSS रूट सम स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे, और वो क्या चीज है कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट अनसर्टेनिटी इन डी देन दिस विल बी यू। अब डी के अंदर इस वक्त कितने वेरिएबल हैं? इस डी के फार्मूले के अंदर कितने वेरिएबल हैं? दो वेरिएबल, और दो, हाँ, और दोनों में अनसर्टेनिटीज है ना। तो हर एक अनसर्टेनिटी के लिए आप डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। सो पहले मैं डी को डिफरेंशिएट करूंगा, पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू मास। डजंट मैटर पहले आप मास करते हैं, पहले वॉल्यूम करते हैं, डजंट मैटर, लेकिन चूंकि पहले मास है तो मैं मास कर लेता हूं, और फिर उसको मास की अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई करके मैं इसका स्क्वायर ले लूंगा, ठीक है? सही है सर। फिर अब एक वेरिएबल के अगेंस्ट तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, दूसरा कौन सा रहता है? वॉल्यूम। तो फिर मैं क्या करूंगा कि डिफरेंशिएट डी विद रिस्पेक्ट टू, पार्शियल डिफरेंशिएट डी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, और जिसके अगेंस्ट आपने डिफरेंशिएट किया है उसी वेरिएबल की अनसर्टेनिटी आपने यहां पे मेंशन कर देनी और उसके स्क्वायर ले लेना, ठीक है? सही है सर। अब अगर इसमें कोई एक और वेरिएबल होता तो फिर मैं तीसरी दफा भी पार्शियल डिफरेंशिएट करता और उसकी अनसर्टेनिटी भी होती, अनसर्टेनिटी अगर उसकी होती। अगर मैं फोर्थ वेरिएबल होता तो 4 दफा मैं डिफरेंशिएट, अगर 10 वेरिएबल होते तो 10 दफा मैं डिफरेंशिएट करता। समझ आ रही है इस बात? ठीक है, अब आपने पहले डिफरेंशिएट करना है, ठीक है?
तो डी को जब विद रिस्पेक्ट टू एम आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है, 1/v आ जाएगी ना, ठीक है, और मल्टीप्लाई अनसर्टेनिटी इन एम आ जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब वो डी को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू वी तो उससे क्या बनेगा, मास माइनस वी स्क्वेयर, सॉरी माइनस 1/v स्क्वेयर आ जाएगा, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, मुश्तबा जी सर। यही आएगा कि गलत करो मैं, ठीक है सर। ठीक क्यों है, मास कहाँ चला गया था, सर मास बाय वॉल्यूम। और क्या आएगा, कोई और स्टूडेंट बता दें, फहद, फहद रसूल, सर ये हाँ बताएं क्या आएगा, व्हेन यू डिफरेंशिएट डी, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू वी तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, फहद, आप सब लोगों से डिफरेंशिएशन भूली हुई है, सर m/v स्क्वायर है, सही है सर, माइनस m/v स्क्वायर। माइनस एम बाई वी स्क्वायर ठीक आ रहा है, सर ये सही है। ठीक है, इनटू अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम होल स्क्वायर, ठीक है, अब इसमें वैल्यूज आपने डाल देनी है, v की वैल्यू, v बार की वैल्यू, अब आपने मीन वैल्यूज डालनी है, ठीक है, v की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, अनसर्टेनिटी इन m की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, v स्क्वेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 का स्क्वेयर, m की वैल्यू क्या है 10 है, अनसर्टेनिटी इन v की वैल्यू क्या है 0.7 है, ठीक है, इन सब को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास अनसर्टेनिटी इन डी की वैल्यू आ जाएगी, और अनसर्टेनिटी इन डी की वैल्यू लेट्स सपोज आपके पास आ जाती है, लेट्स सपोज इट कम्स आउट टू बी 0.25, ठीक है, नाउ दिस इज योर अनसर्टेनिटी इन डी, तो फाइनल जवाब जो आपका होगा, फाइनल जवाब है जो आपका है वो होगा कि डेंसिटी इज इक्वल टू mean value of density plus minus uncertainty of density is equal to, mean value क्या है हमारे पास, this is mean value which is 2 2 kg और plus minus uncertainty 0 हमारे पास क्या है 0.25 0.25, ठीक है, and this is your answer of D, इसे हम कहते हैं अनसर्टेनिटी प्रोपिगेशन, अनसर्टेनिटी प्रोपिगेशन या एरर प्रोपिगेशन हम इसे कहते हैं, अगर आप देखें जो डी की वैल्यू में जो अनसर्टेनिटी आई है वो कहाँ से आई है, वो मास की वैल्यू के अंदर जो अनसर्टेनिटी थी और वॉल्यूम की वैल्यू के अंदर जो अनसर्टेनिटी थी, वो अनसर्टेनिटी उसके थ्रू गुजर के फार्मूले के थ्रू जो है वो डी में प्रोपिगेट हुई है, ठीक है, एंड दिस टॉपिक इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी प्रोपिगेशन और एरर प्रोपिगेशन, ठीक है, तो इस ये जो अभी हमने प्रॉब्लम किया है इसका एज सच उसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है आरटीडी के साथ, लेकिन आरटीडी के एग्जाम्पल को यूज करके आपको अनसर्टेनिटी प्रोपिगेशन या एरर प्रोपिगेशन के टॉपिक एक्सप्लेन किया गया है इस प्रॉब्लम में, क्लियर है यहां तक स्टूडेंट्स, यस सर। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज लेक्चर इज कंप्लीट फॉर टुडे, कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लियर है सर। चलें ठीक है, इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट वीक, हो सकता है मैं 2 क्लासें, क्योंकि लास्ट वीक हमारी क्लास रह गई थी, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक 2 क्लासें मैं फिर रख लूँ, ठीक है, सर क्लासेस ऑनलाइन ही है। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर, बाकी टीचर्स क्या कह रहे हैं, सर बाकी हमारे ग्रुप में सीआर ने
ईमेल भेजी थी, मतलब यूनिवर्सिटी का एक लेटर था, उसमें लिखा हुआ था कि क्लासेस ऑनलाइन होगी, सिर्फ लैब्स वो होंगे, फिजिकल हाँ होंगे। हाँ, यही बात मैंने भी सुनी है, मेरे ख्याल में यही सिचुएशन है। इफ इट चेंजेस तो हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर ये पॉलिसी यही है, वो नेक्स्ट वीक आपको भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चले, तो हम ऑनलाइन लेंगे, अदरवाइज हम फिजिकल क्लास लेंगे। ठीक है, ओके सर। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी सर, जी जी, कहें। सर वो प्रीवियस वीक का लेक्चर सर आपने अपलोड नहीं किया सर। तो वो लेक्चर आपने लिया था? सर लिया था। अच्छा ठीक है, फिर अपलोड हो जाएगा। मैं ओके सर। नॉर्मली इसलिए भी नहीं करता कि आप लोग फिर, अभी देखें, मेरे मेरे क्लास में 70 स्टूडेंट होने चाहिए थे, और मेरे पास इस वक्त सिर्फ मैक्सिमम 18 स्टूडेंट आए। जी सर। ठीक है, फॉर जी दैट रीज़न, ये अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी स्टूडेंट्स को भी